Hello everyone and welcome to my channel Navigate Mindfully. I am Nupur Majumdar, a seasoned educator from a past 20 years. I am AIEF Master Trainer and well versed with the curriculum. We are beginning our journey with the new NCERT English textbook Kaveri, and our first chapter is How I Taught My Grandmother to Read. In this series, I will guide you through each chapter in a clear and structured manner, and we will cover detailed summaries, short and long question and answers, words, meaning and explanation, mind maps for quick revision, important themes and values, poetic devices wherever applicable. Today, I am going to share a heartfelt, touching story, How I Taught My Grandmother to Read, written by Sudha Murty. Now, students, this story teaches us one powerful message that learning has no age bar. First of all, let me ask you something. Do you think there is any age limit for education? Let's find out through this beautiful journey. Learning has no age bar. The story is set in a village in North Karnataka. तो उस समय बेटा देयर वॉज नो फास्ट ट्रांसपोर्ट, नो इंटरनेट, नो मोबाइल फोन्स. Newspapers and magazines arrived very late, maybe in the afternoon. People eagerly waited for the bus that brought news and stories. Reading was not just a habit, it was an event. At that time, a popular Kannada writer, Triveni, wrote a novel called Kashi Yatri. The story was about an old woman, एक बूढ़ी औरत थी, who wished to visit Kashi. काशी जिसको हम बोलते हैं ना वाराणसी, वहां she wanted to go. But in the end, she sacrificed her savings to help an orphan girl to get married. तो उसको ये लगा होगा ना कि इस लड़की का अगर शादी हो जा रहा है, that is more helpful than going to Kashi, right? So it was a simple story, but full of emotions and values. नाउ त्रिवेणी स्टोरीज सिंपल येट प्रोफाउंड. देखो अभी अभी मैंने बताया ना कि त्रिवेणी एक कन्नड़ राइटर थी और उनकी स्टोरीज बहुत सिंपल साधारण हुआ करती थी, लेकिन उनका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट होता था और जो भी उनको पढ़ता तो उसके मन पे एक अच्छा प्रभाव पड़ता था और हर स्टोरी में कुछ मैसेज था, कुछ मॉरल था और लोगों की उनकी स्टोरीज बहुत अच्छी लगती थी. तो ग्रैंड मदर भी ना त्रिवेणी की स्टोरीज का वेट करती थी और ये सीरीज में आती थी और वो वेट करती कि कब त्रिवेणी का नया स्टोरी आएगा एंड व्हेन शी विल बी एबल टू रीड. तो उनको इंतजार रहता था त्रिवेणी की कहानियों का, बिकॉज उनकी लिखने का तरीका बहुत सिंपल साधारण रहता था और पढ़ के बहुत अच्छा लगता था. फिर ग्रैंड मदर जो है उन स्टोरीज को जब भी वो टेम्पल्स में जाती थी या अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलती थी तो बूढ़े लोगों की क्या हैबिट होती है, दे शेयर देयर व्यूज, दे शेयर देयर आइडियाज, राइट? तो उनको बहुत अच्छा लगता था शेयर करना. नाउ ग्रैंड मदर लव्ड द स्टोरीज. उनको त्रिवेणी की कहानियां बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या, द बिगेस्ट प्रॉब्लम, द बिगेस्ट हिंड्रेंस ऑन हर वे और द ऑब्स्टिकल इन हर पाथ वाज दैट शी कुड नॉट रीड. एंड शी लव्ड द स्टोरीज, सो शी हैज टू डिपेंड ऑन समवन इन ऑर्डर टू read for her, right? But she has a deep inclination, a deep fascination, a deep love and a deep understanding for Triveni stories because it always used to create an impact on her heart. शायद ग्रैंडमदर की शादी बहुत अर्ली एज में हो गई थी, राइट? उनको पढ़ने का मौका नहीं मिला था, लेकिन उनके मन में हमेशा ही कहानियां पढ़ने का शौक था. नाउ सी डिपेंडेंस. ग्रैंडमदर को स्टोरीज सुनना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वो डिपेंडेंट किसके ऊपर थी? सुधा मूर्ति के ऊपर थी. बिकॉज सुधा मूर्ति कुड रीड, शी कुड राइट, सो वो सुधा के पास बुक देती थी और सुधा जो ग्रैंड डॉटर थी वो अपने ग्रैंडमदर को कहानियां सुनाती थी. लेकिन उनके मन में एक भावना थी कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, हमेशा मुझे दूसरे का सहारा ना लेना पड़े कहानियां सुनने के लिए या समझने के लिए. लेकिन ऑब्स्टिकल ये था कि ग्रैंडमदर को पढ़ना नहीं आता था, सो इट वाज अ प्रॉब्लम. And Sudha was the child who always used to help grandmother in understanding the stories of Triveni. Now for learning there is no age bar. तो एक बार हुआ ऐसा कि सुधा मूर्ति ग्रैंड डॉटर शी वेंट फॉर सम मैरिज सेरेमनी एंड शी स्टेड ओवर देयर. वो वहां एक हफ्ते के लिए रुक गई. इसी बीच त्रिवेणी की नई कहानियां आई. अब ग्रैंड मदर के पास बुक तो आ गई, शी वॉज पुटिंग हर फिंगर्स ऑन द बुक बट शी वॉज नॉट एबल टू रीड इवन अ सिंगल वर्ड, राइट?
तो उनको बहुत दुख लग रहा था और वो वेट कर रही थी eagerly and impatiently for Sudha Murty that she should return. And when Sudha returned, there were big tears rolling from grandmother's eyes, and she said that this is the problem and I am not able to read, but if you will help me, if you will be my teacher, I will be able to understand the story. So please help me to read, write and understand, to which her granddaughter Sudha Murty agreed. See what a transformation. Granddaughter becomes the teacher. See, when grandmother requested Sudha Murty that you should be my teacher, from today you are my teacher and I am your student, right? So Sudha Murty started with the letters, with the words, and every day whatever work Sudha Murty used to give to her grandmother, she used to revise, she used to repeat, and she used to understand, because there was limitation of time, and in less amount of time she wanted to learn how to read and how to write. So she practiced very hard. Now came the day of Dashera, and it was a great day. It was a big day. It was a day of achievement for grandmother, because learning empowers respect and it flows both the way. Grandmother gave respect to granddaughter because she was not granddaughter for grandmother. She was a teacher, right? And grandmother was now able to read the Triveni stories by her own. So it was a biggest achievement in her life which she had not achieved till date. And she touched सुधा मूर्ति's feet. See, हमारे कल्चर में क्या होता है कि छोटा बड़े के पांव छूता है, right? But the value which is being portrayed over here, that गुरु का स्थान सबसे बड़ा होता है. Though her age was less, but grandmother touched Sudha Murty's feet and Sudha Murty hugged her. She conveyed her respect and love by joining both her hands in the form of namaskar. So it was a big day for the grandmother and for the granddaughter as well. देखो, अब हम थीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो इस स्टोरी में क्या बताया गया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग. तो लर्निंग हमसे कोई छीन नहीं सकता, जा नहीं सकता. सेल्फ रिस्पेक्ट, सबसे पहले हमें अपना आत्मसम्मान देखना है, एंड द डीप बॉन्ड बिटवीन द जनरेशन. सो इट्स नॉट देयर दैट ओनली द ओल्डर पीपल हैव ऑल द वैल्यूज इन देम. इट्स द यंगर वंस ऑल्सो हु टीच अस अ लॉट, हु हेल्प्स अस अ लॉट, right? So it has nothing to do with age. We can teach at any age, we can learn at any age. नाउ देखो, अगर हम देखें तो इसका की मैसेज क्या है, इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है? एजुकेशन एम्पावर्स इंडिविजुअल. जब हमारे पास शिक्षा आती है ना बेटा, हम एम्पावर होते हैं. एम्पावर मीन्स वी डू नॉट हैव टू डिपेंड ऑन एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल एट एनी एज, एंड डिटर्मिनेशन कैन ओवरकम एवरी बैरियर. अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय हो तो हम कोई भी चैलेंज हो, चाहे हम यंग हो या ओल्ड हो या हैंडीकेप्ड हो, वी विल बी एबल टू cover up the obstacle. All the hindrances will not be there. We will be able to tackle each and every situation which is coming on our life. देखो, अब जल्दी जल्दी अगर हम रिकैप करें, राइट, तुम लोगों की हैबिट है ना जल्दी शॉर्ट में स्टोरी समझना, तो वही बता रही हूँ. इन हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, और ये लिखा किसने है? सुधा मूर्ति जी ने. कहानी किसकी है? अ यंग गर्ल जो कि पढ़ाती है अपनी ग्रैंड मदर को टू रीड सो शी कैन बिकम इंडिपेंडेंट एंड रीड हर फेवरेट स्टोरी ऑन हर ओन. हमने त्रिवेणी के बारे में पढ़ा था बच्चों, तो वो बुक्स अपने आप और कैसे वो पढ़ सकती थी जब उनको पढ़ना लिखना आ जाए. सो विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम शी लर्न हाउ टू रीड एंड हाउ to write, and she was no more dependent on anybody for her habit of reading storybooks. If you would like complete notes and detailed question and answers, you may connect with me directly at my number 9958 237 262. After completing the required payment, please share the screenshot and you will receive all the materials promptly. You will also be added in a dedicated academic group for regular updates and support. We will be covering every chapter of Kaveri in depth to ensure thorough understanding and exam readiness, my dear kids. If you find this content helpful, please like, share and subscribe to my channel Navigate Mindfully, and don't forget to show your love and feedback towards our channel by writing your valuable comment in the comment section. Bye. Take care everyone.